जी जनाब, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। आज इस वीडियो पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं। उसका टाइटल है हाउ इंडिया इज बाइंग द यूनाइटेड किंगडम्स लार्जेस्ट कंपनीज। अच्छा, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जी। और हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स हमें काफ़ी अरसे से इसके बारे में कह रहे थे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सॉरी, ज़रा सा थोड़ा सा इसका रिएक्शन आपके साथ डिले के साथ शेयर कर रहे हैं। और दूसरी बात, आपका शुक्रिया कि आपने ये वीडियो हमें रिकमेंड की, बिकॉज टॉपिक वाकई बहुत इंटरेस्टिंग है। और बिहाइंड एशिया चैनल है, उनकी तरफ से ये वीडियो है। और वी डू नो कि इंडियन जो मेगा जायंट्स हैं वो बहरहाल यूके के अंदर बहुत बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, और बहुत सी ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि उन्होंने वहाँ पे परचेज़ की हैं, और अपने बिजनेस को उन्होंने इंडिया से एक्सपैंड किया है बाहर यूरोप की तरफ, ख़ासतौर पे यूके की तरफ। सो एक काम करते हैं, पहले ये वीडियो देखते हैं हम क्या कुछ गैदर कर पाते हैं इससे, और उसके बाद करते हैं डिस्कशन। चलिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वेल, मैं हूं मोना। मैं हूं बिलाल, और आप देख रहे हैं रिएक्शन रतन। तो चलिए जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 एंड गो। Indian companies are increasingly becoming global players, acquiring companies left and right. One of the largest strategic destinations for Indian companies is none other than the United Kingdom. The two countries share a distinct history with one another, one that is built on controversies but also trade, investments, and business cooperation. What led Indian companies to invest in the United Kingdom is not merely due to geopolitics, but also the UK stands as one of the most important financial powerhouses in the entire world, coupled with its technological advancement and robust market. But the most perplexing question about these is actually about India. India is still a developing economy, with an economic size of about $3.3 trillion. While it is above the United Kingdom at $3 trillion, India is still by no means a financial powerhouse. Its investments, which at times ranges to over $1 billion, should then imply a deeper meaning. If Indian companies can invest in overseas companies worth this much, does it then imply that there is more opportunity in the United Kingdom than in India's domestic market? Arguably one of the world's fastest growing destinations. Well, it's quite complicated to say the least, but to understand why India is investing so much in the United Kingdom, we must first understand what companies are Indian businesses buying. To start off, one of India's largest and most famous companies is Reliance Industries. Reliance is a company worth nearly $200 billion and has revenues of more than $100 billion. Their reach, therefore, is significant. And in the United Kingdom, they are one of the most significant foreign investors. In 2021, they made a $100 million acquisition in Faradion Limited. Faradion is one of the leading global battery technology companies. In 2019, Reliance also acquired the British toymaker Hamleys. Hamleys, at the time of acquisition, owned 167 stores across 18 countries. In India, Reliance has the master franchise for Hamleys and presently operates 88 stores across 29 cities. Reliance Industries also acquired the iconic British hotel Stoke Park in 2021 for £57 million. Beyond Reliance Industries, there is also Tata Group. Tata Group has long been a buyer of British goods. Back in 2000, they acquired the giant British tea company Tetley. The deal, which was only $407 million at that time, helped Tata become a global tea company. Tata Motors also acquired the iconic Jaguar and Land Rover from Ford Motors. Although it was owned by a US company, these two are still headquartered in the UK, and its history belongs to that country. On top of these blockbuster deals, Tata Group recently announced in mid-2023 that it was investing a whopping €4 billion in a UK gigafactory. The project will secure UK-produced batteries for Jaguar Land Rover as well as other manufacturers in the UK and Europe. The gigafactory stands at over 40 gigawatts, one of Europe's largest, and will produce a whopping 4,000 employees. In the IT field, we also have Wipro and Infosys. Wipro once made a $1.45 billion deal to acquire Capco, a London-headquartered consultancy firm. Infosys, on the other hand, had acquired a small company known as Brilliant Basics in 2017.
And finally, Tata Chemicals has also been an active investor. It acquired Cheshire Salt Holdings, parent company of British Salt. Another less talked about investment is the acquisition of a 40% stake in Oak North Bank, but eventually sold some of its stake in later years. These are just some of the many more acquisitions out there, but these are enough to prove that Indian companies are indeed buying millions to hundreds of millions and billion-dollar companies in the United Kingdom, which was once India's colonial ruler. As a matter of fact, many observers and even government officials from the UK stated that the UK are beneficiaries of reverse colonialism. This comes to show the massive growth of Indian businessmen and corporations in the United Kingdom. Collectively, it is reported that as of 2021, India had emerged as the second largest source of foreign direct investments for the UK, investing in 99 projects and creating 4,830 jobs. Separate data reported by Invest India showed that India is the second largest FDI contributor in the UK. Over 954 Indian companies employing 105,931 people operate in the UK, with combined revenues of $65 billion from 900 companies in 2022. Now, if these are not enough to tell you that India is indeed a big player in the UK, then one should look at the many British billionaires with Indian origin. One of the most famous belongs to the Hinduja family. It's known that the Hinduja family has a net worth of tens of billions of dollars. They originated from British India, but most of its families, especially its head, had lived in London. The Lakshmi Mittal family likewise resides in the United Kingdom. These and many more Indian billionaires are choosing to live in the UK. But it's also important to note that the UK is also a big investor in India. According to Invest India, the UK is the sixth largest investor in India and has invested $34.3 billion in FDI inflows between April 2000 to June 2023. There are currently 618 UK companies in India with a combined turnover of $45.6 billion, employing about 466,640 people directly as of 2022. Now finally, let's discuss another key feat of these investments: the impact. The economic impacts of these acquisitions, and particularly what they mean for India. First, let's talk about job creation. When a large Indian company invests abroad, it often leads to job creation back home. How? By acquiring a foreign company, an Indian firm can gain access to new technologies and markets, allowing it to expand its operations, which may require additional manpower, therefore creating jobs. Next, there's the issue of technology transfer. For example, by acquiring Jaguar Land Rover, the Tata Group taps into advanced automotive technology. This technology can then be brought to India, paving the way for advancements in the automotive industry, a sector India is keen on developing. Another crucial impact is the strengthening of trade relations between India and the UK. As Indian companies invest in the UK, they bring in revenue, which contributes to a favorable trade balance. Over time, this helps in negotiating better trade terms benefiting both countries. Finally, the most important facet of an investment is that it generates money. When Indian businesses buy overseas companies, it is not for publicity, but it is for making overseas money in dollars, euros, or in pounds. These can then translate into many things. They can use these new dollars to buy more companies overseas, or they can bring it back to their home country, presenting another form of capital. For instance, Jaguar and Land Rover in its fourth quarter of 2023 reported over £7.1 billion in revenue and gained profit before tax and others of over £368 million. This money does not go anywhere but either back to the company, paid in dividends to its owners such as Tata Motors, or may even be used to funnel investments in India. But it's not all roses. There's a flip side to this trend. When Indian companies acquire firms abroad, they might shift their focus away from the domestic market, especially if the overseas market offers better profit margins. This could lead to reduced investment in India, which could be a concern.
But it brings the big question to light. India is the world's most promising developing country. It is growing in high single digits every single year. Whereas the UK has long been known to be a developed country, with population and economic growth to be in the low digits. So how could these Indian businesses justify their investments in the UK? Well, this is arguably a question of geopolitics. However, as we mentioned earlier, one must also look at the technological transfers that can be in play. In the end, whatever happens, these are all still good economic impacts. These acquisitions can be seen as steps toward turning India into a global powerhouse. These acquisitions, after all, are not limited to the UK, but are seen all across the world. But anyway, do let us know what you think. Thanks for watching. आउटस्टैंडिंग वीडियो यार, एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो एंड अगेन थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आपने हमें इस वीडियो की तरफ डायरेक्ट किया और हमने इसको देखा। अच्छा, इसके कुछ टेक अवे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ अपार्ट फ्रॉम द डिटेल्स, क्योंकि डिटेल्स जो हैं वो तो आपने सारी इस वीडियो के अंदर देख ली हैं। मैं जो टेक अवे पॉइंट्स हैं उनके ऊपर बात करना ज़रा ज़्यादा ज़रूरी समझूंगा, और वो ये है नंबर 1 कि इंडिया जो है वो एक बावजूद इस चीज़ के कि वो एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, लेकिन बहरहाल वो यूके जैसे डेवलप्ड इकोनॉमी से ज्यादा आगे निकल चुका है, नंबर 1। हाँ। और वो हमने इस वीडियो के अंदर देखा भी। दूसरी चीज ये है कि टाटा, सबसे पहले टाटा की बात कर लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम द ग्रुप्स, जो कि उसके अंदर जो ग्रुप ऑफ फैक्ट्रीज हैं, हाँ। उन्होंने क्या क्या कुछ एक्वायर किया और क्या क्या कुछ है टाटा के बारे में, हम ये चीज हमेशा से जानते हैं और समझते हैं कि टाटा फ्रॉम जमशेद जी टाटा, उनका ये मोटिव हमेशा से ये रहा है कि भाई जो कुछ भी है वो इंडिया में बनाया जाए, बजाय इसके कि हम बाहर इन्वेस्टमेंट्स करें और बाहर से हम उस चीज को इंपोर्ट करें अपने मुल्क में। व्हाई नॉट हम उस चीज को खुद अपने मुल्क में बनाएं, और ताकि हमारे लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट मिले और हमारे अपने लोगों का भला हो, उनको मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स मिले। और टाटा की कंप्लीट हिस्ट्री में टिल रतन टाटा सर, हम ये चीज देखते हैं कि उन्होंने जो कुछ भी किया बेसिकली टाटा ने मुल्क के लिए किया। हाँ, और अगर मतलब टाटा ने अपने विंग्स को स्प्रेड किया, और मतलब उन्होंने इस वीडियो के अंदर हमें टी के बारे में बताया, वो एक सेल फैक्ट्री के बारे में उन्होंने बताया, या रेंज रोवर के बारे में, या उन्होंने जैगवार के बारे में हमें बताया। ये तमाम एक्विजिशंस इनके बारे में हमें पता है कि टाटा ने की है। अब उसके पीछे एक मोटिव है, उसके पीछे जो मोटिव है वो बेसिकली ये है कि भाई जो अब मतलब सब कुछ टेक्नोलॉजी या जो सब कुछ वहां पर मौजूद है, टाटा खुद अपनी जो क्या कहना चाहिए, टाटा मोटर्स बेहतरीन गाड़ियां, बेहतरीन जो ट्रक्स और ये सब कुछ बनाता है, तो व्हाई नॉट जो टेक्नोलॉजी वहां पर मौजूद है उसके अंदर टैप इन किया जाए और उस टेक्नोलॉजी को अपने मुल्क में लेके आया जाए, ताकि कल को जिस वक्त इंडिया अपनी कार मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इतना ज्यादा एक्सेल कर जाए कि वो अपनी गाड़ियां और अपनी सब जो उनकी प्रोड्यूस है और ये ऑटोमोबाइल्स की शक्ल में उसको जब दुनिया के अंदर भेजे, तो वो बिल्कुल एक वर्ल्ड क्लास चीज हो, और वो कल को बिल्कुल ये किया मोटर्स और ये हुंडई और दूसरी तीसरी जो ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके बराबर पे या उनसे बेहतर अपनी एक प्रोडक्ट को वो लॉन्च करें। अच्छा, इसका एक और बहुत बड़ा फायदा जो है वो ये है कि जिस वक्त आप मतलब वहां पे कंपनीज को आप एक्वायर करते हैं, तो मतलब अपार्ट फ्रॉम मनी मेकिंग, उस चीज को बाद में डिस्कस करते हैं, आप जो हायरिंग करते हैं वहां से मजीद लोगों की जो कि यहाँ पे आके प्लांट्स लगाते हैं, या यहाँ से आप अपने ऑलरेडी स्किल्ड वर्कफोर्स को वहां पे बुलाते हैं उनको अपग्रेड करने के लिए, एंड देन वो अपने आप को अपग्रेड करते हैं और वो वापस आके यहाँ के जो प्लांट्स हैं उनके अंदर वो ज्यादा बेहतर और एफिशिएंटली उस टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल करके एक नई और बेहतरीन चीज को वो बनाते हैं। तो इवेंचुअली उस चीज का फायदा जो है वो इंडियन मार्केट को ही है, एक बात। दूसरी चीज ये है कि अब अगला तमाम का तमाम जमाना जो है वो बेसिकली इट इज ऑल अबाउट जो क्या कहना चाहिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एंड ऑफ कोर्स ये जो आपकी गाड़ियां वगैरह और दूसरा तीसरा मामला है वो तमाम ईवी पे शिफ्ट हो जाएंगे। बिल्कुल ईवी पे शिफ्ट हो रहा है, और हम ये चीज देखते भी हैं कि इंडिया अपने आप को बहुत तेजी से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ लेके जा रहा है। मतलब क्या रेलवे और क्या रोड पे चलती हुई गाड़ियां। सो ये जो उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं वहाँ की फैक्ट्रीज के अंदर, वहाँ की जो मेजर कार प्रोड्यूसर्स हैं उनके अंदर, और ये सारा कुछ इवेंचुअली
इंडिया के बहुत ज़्यादा काम आएगा। कहने को वो एक अमेरिकन कंपनी है फोर्ड मोटर्स और वो उसका हेडक्वार्टर जो है वो लंदन में है, लेकिन आप देखिए कि रेंज रोवर हो गई है, जैगवार हो गई, ये दुनिया की बेहतरीन गाड़ियों में से एक है। सो बाइंग दोज कंपनीज मीन्स कि आपने उस मतलब वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है उसके अंदर आपने टैप इन कर लिया है कि अब आप जब उसको वापस अपने मुल्क में लाके अप्लाई करेंगे तो यू विल बी मेकिंग फार बेटर व्हीकल्स फ्रॉम व्हाट यू आर ऑलरेडी प्रोड्यूसिंग। सो मतलब एक तो चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि आपकी वर्क फोर्स जो है वो जब यहाँ से वहाँ जाती है तो वो स्किल्ड होती है, वो वापस आती है तो वो ज़्यादा बेहतर तौर पे यहाँ पे काम कर सकते हैं एंड इवेंचुअली ये पूरे का पूरा एक सर्कल है जो कि चलता है। हाँ, इसके मुकाबले में पैसा भी बनता है, बेशुमार पैसा बनता है, लेकिन मैं इस वीडियो के अंदर जो आखिर में की गई बात है उससे मैं मुकम्मल तौर पे एग्री नहीं करता। हाँ। बाहर बिजनेसेस को बाय करने का कतन ये मतलब नहीं है कि जिस वजह से आप इस काबिल बने हैं कि आप बाहर के बिजनेसेस को बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स या पाउंड्स या यूरोस के अंदर आप उनको खरीद रहे हैं, आप उस वजह को ही ख़त्म करने की तरफ जो है वो चल पड़े। यूके एक छोटी कंज्यूमर मार्केट है, इंडिया एक बहुत बड़ी कंज्यूमर मार्केट है। सो कैसे हो सकता है कि ये तमाम की तमाम कंपनीज, टाटा, रिलायंस, जिन्होंने अपने बिजनेसेस को यहाँ से शुरू किया, बेसिकली इस बड़ी मार्केट से स्टार्ट किया, तो वो इसको ही अब इग्नोर कर देंगे और वो उनकी तरफ उनकी तवज्जो ज़्यादा हो जाएगी जो कि उनके नए बिजनेसेस हैं, जस्ट बिकॉज के वो रेवेन्यू जो है वो फॉरेन एक्सचेंज की शक्ल में। ऐसा नहीं है। बेसिकली यही है कि जो मकसद है वो उस टेक्नोलॉजी के अंदर टैप इन करना है, अपनी वर्कफोर्स को मजीद स्किल्ड करना है और जो रेवेन्यू वहाँ से इकट्ठा होगा वो वापस मुल्क के अंदर आपके फॉरेन रिजर्व्स के अंदर आए या वो वहीं पे हो और उसको यूटिलाइज किया जाए नई कंपनीज को परचेज करने के लिए। एट द एंड ऑफ द डे ये सब कुछ भारत की इकोनॉमी के लिए ही किया जा रहा है और ये बहुत अच्छे स्टेप्स हैं। सो ऑल इन ऑल मतलब मेरी नज़र में ये दो टेक अवे पॉइंट्स थे और फिर ऑफ कोर्स हम ये चीज़ देखते हैं कि कोई तो ऐसी वजह है कि अब यहाँ पे हमने विप्रो के बारे में भी हमने देखा, हमने इन्फोसिस के बारे में भी इंफॉर्मेशन ली, मैंने इसीलिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की यहाँ पे बात की और हम इन्हीं चीज़ों के ऊपर फिर हमने कई ऐसे बिलियनर फैमिलीज देखी इंडिया के बारे में। उन्होंने बताया कि जो कि परमानेंटली अब जो है वो वहाँ पे रिजाइड करते हैं, लंदन में वो रहते हैं या यूके में मुख्तलिफ इलाकों के अंदर वो रह रहे हैं। सो दैट मीन्स कि वो अपना बिजनेस यहाँ से वहाँ शिफ्ट नहीं कर रहे, वो बेसिकली वहाँ पर भी बिजनेस को फैला रहे हैं एंड एट द सेम टाइम उसी रेवेन्यू को और वहीं से जो टेक्नोलॉजी एडवांस उनको मिल रही है वो उसको यहाँ पर भी अप्लाई कर रहे हैं। सो वो रूट्स तो यही बिल्कुल बिल्कुल वो विंग्स अपने स्प्रेड करने के अंदर कतन किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ करता मेरी नज़र में किसी भी सूरत। और हमने ये चीज़ इस वीडियो के अंदर देखी कि इंडिया जो है वो सबसे बड़े इन्वेस्टर्स के अंदर से यूके के आता है, मतलब सेकंड लार्जेस्ट इन्वेस्टर है और इसी तरह यूके भी बेपनाह इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर कर रहा है। सो दो मुल्कों के दरमियान, दो बड़ी इकोनॉमीज के दरमियान जब इस तरह से कोलैबोरेशन होती है, जब वो एक साथ मिलते हैं तो नेचुरली इस चीज़ का फ़ायदा दोनों मुल्कों को ही होता है, दोनों मुल्कों की इकोनॉमीज पे उस चीज़ के असरात आते हैं। सो ऑल इन ऑल अ वेरी वेरी गुड वीडियो। बहुत कुछ हमने जाना इस वीडियो के बारे में और इस वीडियो के ज़रिए आप बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पे, अपना बहुत ख्याल रखिए।